Are we good to go? Okay, friends. So, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, today is a big day, a huge, huge, huge big day, especially for all those aspirants who want to make judiciary as their career amongst the most powerful, amongst the most glorious career that you could actually conceive. So, what has An Academy brought for you? An Academy has brought for you what is called as 360-degree preparation for judiciary. What does 360-degree view actually mean, actually? So what happens is, what most people have been doing in the past is that one person will start teaching all the subjects related to judiciary preparation. It's just not practical. It's just not feasible. It just does not cut the ice. So you will never reach where you want to reach with such a kind of training. So what has An Academy brought for you? We have subject experts. We have subject experts faculty who will be dealing with only their particular subjects. So in another way, absolute huge core subject teaching will take place. You will not have to look anywhere else for absolute 24 karat preparation in that particular subject. So we have with us amongst the best of the best educators in this field amongst us. And before I introduce and before I ask them to share their views from you, let me just tell you this is a glorious chance. So for all the judiciary aspirants, don't miss this chance and make sure that you make yourself absolutely battle ready for amongst the toughest exams in the world. So before us today is the first faculty amongst us is Madam Apurva Vats, and she is an awesome educator apart from being a dynamic and a very expert advocate practicing in Delhi. She has delivered an extraordinary performance in LLM. She's done masters in criminology. Brilliant lawyer practicing in Delhi High Court and various district courts in Delhi. She has excellent oratory skills and empathetic nature, which will make her a great educator. So, this is a very good combination with great brains and great empathy. And I'm sure she will communicate her to those students who are preparing for her. Apurva, can we please have you and give us a small few words for your educators here? Apurva, please. Thank you so much. Thank you so much, sir. Hey, you all learners. As sir already told, I'm a Purva Vats. I'm a positive person who has, an enthusiastic outlook on life. I love this job. I love this platform and academy. And also, I get a sense of achievement from seeing my students, you all learners, to develop and grow as individuals, right? So I believe that knowledge is the greatest power in this world, and excellence in educations come with excellence in attitude, right? And this is the motto I work on. So if I can have a positive impact on you guys, so I feel I'm doing my job well. So let me discuss about my expertise in subjects. I am going to conduct Hindu law, family law, or criminal law for you guys, and special act for judicial exam. Along with this, my target is to cover all MCQ, previous year question papers, important landmark judgments, and many more. My focal point is judicial exam pattern and strategy for various subjects. Also, my students have a strong grip throughout the journey of learning. So you can go through my videos. Also, you can attend my further sessions, and that's all about me. And that is on Judicial Exam 360. Thank you. Thank you, Apurva. And we also have amongst criminology, if I am correct, and security laws. My God. He is an advocate practicing specially in criminal matters. And in his journey as a judicial aspirant, he has cleared the mains exam also and appeared for the interview. But his inherent passion towards teaching has brought him to help the students to increase the chances of becoming a judicial officer. Devashish, that is some resume. I understand this. So please go ahead and tell your students what you are going to contribute and how you would like to take this journey further. Thank you so much, Siddharth sir. First of all, thank you so much. A very good afternoon to all the learners out here. So, as sir has already introduced me, this is Devi Pandey. I'm an educator at Judiciary Exam 360.
So first I will tell you the idea of this channel. So by this channel, we have tried to provide a one-stop solution to all your problems with reference to the judicial services exam. From the mains answer writing to the MCQ quiz, from the past year papers to the important topics of law, from legal translation to essays, you name it and we have it. In this channel, we have tried to consolidate all the needs that will increase your chances of being a judicial officer. So in the same vein, the subjects that I will be teaching will primarily be the criminal procedural laws. In that, it is the criminal procedure code that I will be dealing with. Other than that, I'll be also dealing with the Indian Evidence Act and a proportion of TPA also that will be dealt by me. Other than that, I'll be also focusing on the other topics like legal translation, essays, and mains answer writing. We have recently started a series on legal translation on the Unacademy app. This is a portion of mains exam which is largely neglected initially by the students, but it holds the greatest importance. So we have tried to understand everything and then bring these solutions for you. So I'll just take one more minute to tell what will be my pedagogy of teaching. So sir, as you know that judiciary is a very important, a premier exam of the country, and the course is very wide. So I have devised a unique pedagogy, which I believe is unique. I think this it will be helpful for the students. So it will be based on two things. The first will be the interlinking of subjects, which in my previous videos, if the learners can go and watch. So my pedagogy will primarily be based on interlinking of subjects, because that is the most important thing if you want to be a judicial officer. Because sir, we have to understand that in judicial services exam, everybody is a law graduate. Everybody knows the basic law. What will give you an edge over the others in the mains exam, in the interviews, or in the prelims exam also is your ability to enhance your skill in a certain way. So that will be directed in every lecture that we will be taking. So we are focused on this. If I can just illustrate, supposedly I had a lecture in a couple of days before on the inherent powers of the High Court. So that was 482 of the criminal procedure. But it is important for the learners to understand that whenever you are talking about the inherent powers, you have to consider section 165 of Indian Evidence Act, 151 of the Code of Civil Procedure, 142 article of the Indian Constitution. So by this, I mean the interlinking which will enhance. And the second will be important topics with reference to the exact stage of the exam. That is, which topic is important for pre, what are the question in mains, and how to tackle it. Right, Devi, we'll come back to your detailed strategy in just one moment. Before I introduce gentleman with us, Advocate Sanyog Vyas, who of course is no stranger to judicial training, and he's been training all students for all aspirants who've been preparing for judiciary for the last 10 years. So I don't think I should say any further and let him introduce himself. So that is better, right, Mr. Sanyog Vyas? So Sanyog sir, please carry on and please explain to the Thank you, Dr. educated. Siddharth Arora. Thank you, Devashri sir, Purva ma'am. So it's been a great journey. If I start with my journey now, I started my journey in 2011. After completing my LLB, I started studying for LLM and I started teaching as well. So, in these last 10 years, I have realized the more I teach, the more I fall in love with teaching. And what I feel this is the most satisfactory profession. I mean, all over the world. I have never seen any profession, which can, change the society. And, if you are teaching something, you are making a very important, contribution in the society. And as far as judiciary examinations are concerned, so here, our responsibility is on the next level, because we have to prepare the best of the best. We have to prepare the best candidates who can, qualify the judiciary examination, and they can deliver the best judgments, because every judgment in every court has its own economical, social, psychological impacts. So it's very important prepare yourself, prepare yourself for judicial examination, and not only theoretical preparation. Your mindset is equally important. Sayok sir, if I may, What I have. Sayok sir, if Yeah. I may take a supply question right here. Okay, and those who are watching us, viewers would be very curious to know why should and
till what extent would taking a judiciary exam take my career further? What are the opportunities if I take this exam further? So, I mean, that's the best place that you can start with. And please answer. I mean, uh, as far as opportunities are concerned, there are numerous opportunities for judiciary aspirants. After getting selected in judicial examination, later on they can be a high court judge, or they can be a justice in Supreme Court, right? So what we have, what we have experienced, what we are watching right now, whatever is happening in India or whatever is happening in all over the world, judiciary has a very important role to play. And I have seen some of my some of my students, some of my known people, they appeared for judiciary exams interview, and they told me, sir, there was no questions about theoretical knowledge. In some states, this is also happening. True. They don't ask you about your subject knowledge because the interview panel already knows that you have qualified pre-examination, you have qualified mains examination. So this candidate must be very aware about the laws. But the point is how he is going to apply the law. Let me give you an example here. One of my friend, he is a judicial officer. He's a judge in MP. So one day he gave me a call and he said, I have got a very interesting case where there is a case in which one of the party is transgenders. Okay. And what they are demanding, what they are saying, that whatever they do to earn their livelihood comes under Article 19. So you cannot stop them. You cannot stop them to do what they are doing to earn their livelihood. So I was very surprised. And I asked him that, how you guys handle all these questions. So he told me, that is the best part about judiciary. Every day you need to deal with different problems. Every day you will have different challenges. One more example, if we all can relate, in the earlier times, every king used to be the judge. Yeah. Every king used to be the judge, and they used to decide the Dharam Chakra. civil and criminal matters. Yes. Yeah. But now things have changed. And role of every judge is not less than a king. True. Although they are not a king True. in formal ways, but their role is very important. That's great. Apurva, could you please take us through the entire journey of a judiciary exam, like the stages, etc.? What do you in summarization what this exam would be all about? Ma'am, you're on mute. Apurva, you'll have to unmute yourself. Thank you. I'm sorry. Yes, like your students are commenting that its session is bilingual or not, or this session is Let's do bilingual. This channel is bilingual, yes. तो मैं सभी को जवाब पहले दे दूं. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि यस, हम दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. और साथ ही साथ जैसा कि सर ने मुझसे पूछा है कि क्या है जर्नी, जज के पर्क्स क्या है, इस पोजीशन के पर्क्स क्या है. So, if I talk about opportunities, oh my God, matlab numerous perks. Also, a judge on this post in Indian judiciary is a reputed person, right? This profession brings a lot of respect, authority in different matters relating to nation, right? Also, अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो सबसे पहले हम सभी को, जो भी आप लर्नर्स हैं, जिनका भी एम है, ड्रीम है जुडिशियल ऑफिसर बनना, उनके लिए सबसे आई थिंक द इनिशियल पॉइंट इज टू एम, राइट, टू डिसाइड कि यही करना है और कहीं नहीं जाना. मतलब दिस इज माय लाइन, दिस इज माय वे, और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े आई डू. सो सबसे पहला एक एम डिसाइड करना, और फिर उसके बाद उस एम के लिए, उसको फोकस करने के लिए, इसके लिए काम करना. फॉर दैट आपको अच्छी क्लासेस लेना, अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छे बुक्स लेना. उसके बाद सबसे पहले जो एक पार्ट आता है वो प्रीलिम्स पार्ट आता है, कि जहां पर बच्चे आप प्रीलिम्स एग्जाम को देकर और उसको क्लियर कर आप अपनी जर्नी के नेक्स्ट मोड पर जा सकते हैं. I'll take one thing. Step number 1, if sub learners note कर ले, step number 1 is prelims, right, Apurva? Yes. Yes, sir. Fine. Let's go. Sir. Step number 2. And then एक नया चैप्टर शुरू होता है प्रीलिम्स के बाद. प्रीलिम्स को क्लियर करना ही एक एजेंडा नहीं है, एक हमारा मोटो नहीं है, बट हमें उसको पूरा एंड तक लेके जाना, वो हमारा मोटो है. और स्पेसिफिकली इस चैनल का जो
प्लानिंग है वो यही है कि आपको पूरे एंड तक लेके जाना, बिकॉज आप अपने घर में प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं और से कोचिंग ले रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स और ये सब के बारे में आप अवेयर होते हैं, बट आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए, आप सभी को टॉपिक्स क्लियर हो गए, बट व्हाट अबाउट रिप्रेजेंटिंग योर talent or representing your concepts? What about that? So we are including everything about these strategies or these patterns, like answer writing, as Devashish sir told, about legal translations, essay writing. So हम लोग हर चीज पर फोकस कर रहे हैं आप सभी बच्चों की, इवन लाइव टेस्ट सीरीज टू सी individuality performances. So Apurva, तो सब after कुछ है prelims, आपको after prelims, what Yes. do I have to do? आफ्टर प्री, यस आफ्टर प्री, फिर उसके बाद हम तैयारी करेंगे मेंस के लिए। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, जैसे कि ट्रांसलेशन और ये सब मेंस एग्जाम के लिए, प्लस विल फोकस ऑन स्टेट लॉज, लाइक लोकल लॉज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट मेंस के लिए, और उसके बाद हम आपको आगे भी गाइड करेंगे फॉर इंटरव्यू सेशन, और अगर आप अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मेंस में, अगर आप, तो फिर इंटरव्यू के लिए, तो पूरा थ्रू आउट द जर्नी के लिए हम लोग 360 नाम इसलिए रखा है कि एंड टू एंड हम लोग सभी चीजें आप सभी के लिए करेंगे। ऑल यू गाइज नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब, और हमारे साथ रहना है, और हमारी अगर हम आपकी जर्नी में साथ दे रहे हैं, तो आपको हमारा साथ देना है अपनी जर्नी के लिए। Great, thank you. सो Apurva. दैट्स ऑल। थैंक यू। देवशीष, मुझे बताओ, मैं जुडिशियल एस्पिरेंट हूँ, मुझे पास होना है, मेरे को जज बनना है, क्या चैलेंजेस आई शुड बी एक्सपेक्टिंग? Is it easy? It is difficult? Or even if there are challenges, तो क्या challenges? What should I be ready for mentally as well as for my preparation? Please, enumerate 1, 2, 3, 4, 5, something like that. Yes. As a judicial aspirant, the first challenge is, because this exam the course is very vast, and there has to be a right strategy at the first point of time if you want to be a judicial officer in this country. So the biggest problem that I see amongst the student which I interact, and with my limited knowledge that I have, that the approach that is normally taken by the student, उसमें थोड़ा सा missing है. I tend to explain. Like first thing is कि मैंने majority of the students देखा है कि वो जैसे pre की पहले तैयारी करते हैं, ठीक है, and they think once the pre is clear, then we will see mains की तैयारी. पहले भी करते हैं, but वो substantive नहीं हो. So that is a fundamental flaw. To all the learners who are listening to this, this is fatal. You cannot be more wrong than this. आपको मेंस की तैयारी पहले करनी, और when the pre comes, तो 2 महीने पहले आप pre की तैयारी करना शुरू करें. So very So this is the important right strategy. takeaway. I'm sorry, Devashi. So very important takeaway to everyone who's watching. Devashi sir is telling you mains की तैयारी पहले करो, prelims अपने आप हो जाएगा. Am I correct in understanding this? Right. Lovely. Right. Okay. Because if you clear the prelims देखो objective होता है, ठीक है ना, वो एक बार फिर भी आप 1 महीने में कर सकते हो अगर आपने बहुत सारे MCQ लगाए. But mains नाम ही उसका मेन है, और हिंदी में भी उसको मुख्य परीक्षा लिखा जाता है, because that is the deciding factor. उसके मार्क्स जुड़ते हैं, और वही एक्चुअल देखो, प्री इज जस्ट स्क्रूटनी, दे आर जस्ट चेकिंग कि हम किसकी कॉपियां चेक करें, who is eligible to get can be assessed, who can be assessed. तो पहला चीज तो सर ये जो अप्रोच. सेकंड इज व्हाट आई टेंड टू वांट द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड कि आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो उसका आप लेजिस्लेटिव इंटेंट समझें. Because every law, whatever law you are talking about, either it's CRPC, CPC, evidence, that is based on a legislative intent and a logical flow. अगर आप उस flow को, उस spirit को समझेंगे, तो the law will come very easy. वरना ऐसी चीजें मगअप करने में बहुत difficult होगा, सारी चीजें human brain नहीं कर सकता. So that is the second. And the third and the last thing is guidance, which I believe is a challenge. Because देखिए, the problem, sir, what I feel with the judicial aspirants, क्योंकि सबने basic law पढ़ा है. If you are going for other repeated exams like UPSC or else, तो आपको लगता है कि नहीं, आपको coaching की जरूरत है. But when it comes to judiciary, because everybody is a law graduate, they tend to think that they know the law, they can improvise on that, and they can clear the exam. But वहाँ पे थोड़ा सा error है, because studying law, understanding law, and clearing a competition requires 2 different set of minds. Correct. So उधर पे उनको अगर right guidance मिलेगा तो they can. Lovely. Yes. संयोग सर, एक शायर ने बोला था, मेरी कहानी रुदा दे जहां मालूम होती है, जिसे देखो उसी की दास्तान मालूम होती है. तो मुझे ये कहानी आपको भी होगी कि why Unacademy 360 degree, why our channel, this channel, ऐसा क्या मदद करने वाला है मुझे? So this is the
सबसे पहला या मेजर क्वेश्चन शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछने वाले हैं कि व्हाई अन अकेडमी करेक्ट जुडिशरी एग्जाम 360 only? क्योंकि as you know Apurva ma'am said के here we are giving 360 degree preparation. What I have experienced, what I have seen कि students क्या करते हैं, they buy a book, MCQ questions होते हैं, MCQ questions को solve कर लिया, pre का एग्जाम उन्होंने दिया और pre का एग्जाम देने के बाद they judge themselves, हाँ मेरा क्लियर हुआ, मेरा क्लियर नहीं हुआ, और they start assuming themselves कि मेरा अब मेंस का एग्जाम क्लियर हो जाएगा. So as Devashish sir clearly said, strategy is very important. So here what we are doing is हम आपको students को especially we are preparing them for mains examination. Mains के एग्जाम के अकॉर्डिंग उनकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आंसर राइटिंग हम लोग बता रहे हैं, साथ में हम जो MCQ पैटर्न्स है, हम MCQ पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम उनको ये बता रहे हैं कि देखो सर एक स्टूडेंट का एक माइंडसेट होता है कि इतनी बड़ी बुक है, 2000 पेजेस है, मैं कैसे कवर करूंगा, 4000 पेजेस है, हाउ आई एम गोइंग टू कवर इट. तो वो पहले स्टेज पे है ना, वो ऐसा होता है कि मतलब छोड़ दो, गिव अप कर देता है, गिव अप करो, यस, छोड़ दो. तो व्हाट वी हैव एनालाइज्ड दिस एंड वी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि ऐसा स्टूडेंट्स सोचते हैं, तो इसलिए वी आर गोइंग टू डिवाइड ईच टॉपिक इन स्मॉल पार्ट्स. जैसे कि आई एम गोइंग टू टीच सिविल प्रोसीजर कोड एंड आई एम गोइंग टू टीच कॉन्स्टिट्यूशन, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ. सो जो सिविल लॉ का पोर्शन मैं कवर करने वाला हूँ, उसमें व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एंड दिस इज व्हाट माय टीम मेंबर आल्सो दे आर गोइंग टू डू इज, कि हम लोग हर टॉपिक को डिवाइड करके एंड रिलेट करके कवर करना कि एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से क्या रिलेशन है. और जब सर बीच बीच में जब स्टूडेंट्स के टेस्ट होंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, तो उनकी प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चलेगी. अपूर्वा मैम, आप इस बारे में आपके भी सब्जेक्ट्स बड़े ही इंटरलिंकिंग डिपेंडेंट है, इफ आई एम करेक्ट इन माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. तो हाउ वुड Yes, sir. यू टेक द जर्नी ऑफ द स्टूडेंट्स अहेड? व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन इन दिस रिगार्ड? Yes, sir. सर जैसा कि सभी लर्नर्स जितने भी बच्चे मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं या जो आगे भी करेंगे, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि मैं एक प्लानिंग के साथ एक सब्जेक्ट को लेती हूँ. ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट कर दिया, सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको बस पढ़ा दिया और खत्म. नो, आप जैसे कि अभी मैं हमारी रेस्ट ऑफ द वीडियोस देखेंगे जो अभी ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको देखेंगे तो आप 100 क्वेश्चंस अगर आप एक MCQ पेपर मॉक टेस्ट अपने घर में कर रहे हैं, तो 100 क्वेश्चंस सभी टॉपिक्स के हैं, मिक्स हैं. जो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा वो भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, और वो भी अटेम्प्ट करना पड़ रहा है जो आपको आता है. तो यहाँ पर जैसे कि मैंने MCQs भी कंडक्ट करवाए हैं, वो टॉपिक वाइज कंडक्ट करवाए हैं. अगर मेरी IPC की आप सीरीज देखेंगे MCQ की, सभी लर्नर्स, तो मैंने टॉपिक वाइज MCQ लिए हैं और मोस्टली सारी MCQs को कवर करने की कोशिश की है. चाहे एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूछा गया है, अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, तो मैंने सभी चीजें कवर कराई हैं. और अब सेम जैसे कि अब हम लोग अपना उदय बैच स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, तो मैं आप सभी को बता दूं कि वहां पर इन डेप्थ जो अब के आने वाले ये जैसे कि बहुत क्रूशियल टाइम है, जैसे कि सारे पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, फिर कुछ अभी कोरोना के सिचुएशन के बाद पता नहीं है कि कब क्या होगा. तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है बच्चों आप सभी के लिए, और ये प्रिपरेशन का इतना बेस्ट टाइम आपको मिल रहा है कि आप अगर आपकी प्रिपरेशन इस लेवल पे है तो आप उसे नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, जैसे सर ने बोला. तो उसी के लिए अब जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, इसी तरीके से हम तीनों जो एजुकेटर्स हैं उस तरह से प्लान करें कि आपके ऊपर एक बर्डन ना पड़े. ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं कि आप इकट्ठे 2 सब्जेक्ट्स को साथ साथ कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से 1 महीने के अंदर आप अपने 2 सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं. तो इस पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं, प्लस पूरी बैकग्राउंड, रूट्स, ओरिजिन को लेकर और अब तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तक को लेकर हम लोग कवर कर रहे हैं. तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल MCQs, लेटेस्ट जजमेंट्स, लैंडमार्क केसेस, तो एवरीथिंग वी आर कवरिंग. तो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये हमारा चैनल. आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और शेयर करना भी चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर और इतनी अच्छी एक प्लानिंग जहां पर आपको मिल रही है, आपको सारी चीजें मिल रही हैं, तो जरूर आप हम सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. इवन वी हैव टेलीग्राम चैनल जहां पर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो आपको सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कौन शेड्यूल्स है, क्या बैचेस हैं, तो सारी चीजें आपको पता रहेंगी. Thank you. Thank you, Apurva. Devi, sir, in so far as preparation for judiciary is concerned,
आप क्या सजेस्ट करेंगे विद रिगार्ड्स टू टाइम मैनेजमेंट? हाउ विल वी बी एबल टू better manage time with regards to the preparation of judiciary? The time management के लिए I'll say that if you want to do the complete preparation of judicial services That is for because the you northern said कि जी, आपके पॉइंट था कि मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ हम प्रीलिम्स करेंगे, तो आई थिंक right, ऑल लर्नर्स मस्ट बी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि कैसे टाइम को बेस्ट मैनेज किया जाए. right sir. So I believe for the preparation of judicial services exam के लिए आपको 10 months का तो proper study चाहिए for the mains preparation, ठीक है. और जब प्री आएगा तो उसके 1-2 महीने पहले आपको प्री की प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए. So it demands one complete year for you to do the preparation in such a way कि आपका first attempt में judiciary निकल जाए. और learners I'll tell you कि यार ये जो 12 महीने की पढ़ाई मैं बोल रहा हूँ, you'll have to ultimately do it. There is no shortcut for that. If you think कि आपने 1-2 महीने पढ़ के प्री निकाल लिया या 4 महीने पढ़ के शायद मेंस भी निकल गया, तो भी आप समझिए देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से रुक जाए. अगर आप जज भी बन जाते हो देन आल्सो यू अंडरस्टैंड you could have got the first rank if you would have worked for that on time. Wow. So that is the crucial thing. आपको पढ़ना ही पड़े. पढ़ना ही पड़ेगा माय फ्रेंड्स, पढ़ना ही पड़ेगा. ओके, सो दीज आर सॉलिड advisors and these are solid takeaways. Make sure that you write it down in red letters and उसको underline करो फिर bold करो. पढ़ना ही पड़ेगा. There is no shortcut in this exam. Right? Yes. So that is so. As the last part, Sayok sir, I will start with you. Okay. Learners ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे a small but a summarized form of what are your views, आपके closing statements, what should be your message to all the learners and aspirants in this exam. उनकी जर्नी में आपके वर्ड्स दूर तक साथ देंगे, तो प्लीज. सर आई वुड स्टार्ट विथ मैं ये बोलने से स्टार्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले जो हम लोग अभी बैच लॉन्च करने वाले दैट बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड थिंग इज सब्सक्राइब कर लो जुडिशरी एग्जाम 360 को. एक जो अप्रोच हम लोग यहाँ पे डिफरेंट देने वाले हैं, जिस अप्रोच की हम लोग बात करने वाले थे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू एड्रेस द एटीट्यूड रिलेटेड इश्यूज. जुडिशरी एग्जाम में क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो 4 डेज 5 डेज प्रिपरेशन करी, एकदम यूं जो शायद कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, 1 हफ्ते प्रिपरेशन करी एंड देन नहीं हो रहा मुझसे. आई फाइंड इट वेरी बोरिंग. तो हम लोग उसके उस पार्ट को भी हम लोग एड्रेस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू गिव देम सॉर्ट ऑफ टारगेट्स हम लोगों को देने वाले हैं कि आपको इतने एमसीक्यूज करने, इतने क्वेश्चंस करने हैं, प्रेजेंटेशंस टू मेक योर ओन प्रेजेंटेशन एंड नोट्स बनाने वाले हैं, ताकि जितना हम और ये हम लोग एक्चुअली करने वाले हैं कि इस चैनल के थ्रू हम लोग उनके ऊपर पर्सनली फोकस करने वाले हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, ताकि उनकी जुडिशरी की जर्नी जो है वो बहुत स्मूथ हो जाए और उनको ये ना लगे कि जुडिशरी इज टफ. ट्रस्ट मी, इट इज नॉट टफ. It is not tough. All right, that's great. Coming from Sayok sir, okay, who has taught hundreds and thousands of aspirants, it is not tough, but पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा. So both the things, right? So that's the way. So Apurva ma'am, I read a book, and that book says the first thing is start with why. Simon Sinek की बड़ी famous book है, start with why. तो मैं एस्पिरेंट्स और लर्नर्स की तरफ से आपसे पूछता हूँ, why an academy, why 360 degree, why you, why not somewhere else? ओके, अगर मेरे सभी स्टूडेंट्स के पास इतने सारे वो है वाई है, तो मैं उनको जरूर बहुत नहीं, एक ही तसल्ली why, से only जवाब one देना why. चाहूंगी. अच्छा, Okay, I ओके. have Why very 360? one why. Why Judiciary Exam 360, नहीं, right? नहीं, हाँ, And yes. why an academy? Yes, yes. Right. Okay. So guys, जैसा कि सिचुएशन, पहले हम फर्स्ट एक प्रेजेंट सिचुएशन पर आते हैं. जैसा कि चल रहा है, इतना रिस्की माहौल है, हम अपने घर पर बैठकर अपनी कंफर्ट जोन में चेयर स्टडी पर बैठकर हम लोग ऐसे टॉप प्लेटफॉर्म पर, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अकेडमी, और उसके बाद टॉप एजुकेटर्स आप सभी को आपकी जर्नी में आपका साथ दे रहे हैं, राइट? हम आपका इतना साथ दे रहे हैं. आपको अगर आप हमारा इतना सा भी साथ दोगे ना, तो एटलीस्ट देखोगे 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद कहीं ना कहीं किसी लेवल पर पहुंच जाओगे. एटलीस्ट ये कह पाओगे कि हाँ, मेरी ये सब्जेक्ट क्लियर है, ये मैं सब्जेक्ट दोबारा नहीं पढ़ने वाला, मैं जैसे रिवाइज करूंगा या करूंगी और मेरा ये कंप्लीट है.
इतना सा साथ दे दो, मतलब आपको थोड़ा सा हेक्टिक लग सकता है स्टार्टिंग में क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस होंगी, ये होगा, बट ट्रस्ट मी, आपको इन सब चीजों की जब हैबिट लग जाएगी या फिर आपको पसंद आने लग जाएगा, समझ आने लग जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप क्यूरियस रहेंगे बल्कि नेक्स्ट क्लास के लिए। और जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि आज क्लास क्यों नहीं है। प्लस उसके बाद हम सारी लाइव टेस्ट सीरीज आपकी पर्सनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। और जैसा कि मैं अपने हर सेशंस में बोलती हूँ कि मुझे सेशन को कंप्लीट कराना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो कंप्लीट कराऊंगी। मेरे लिए योर डाउट्स आर इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपका एक भी डाउट है तो मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी कि उस डाउट को हम पहले खत्म करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो ये सारी चीजें जिस पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो है आपकी इंडिविजुअलिटी पर, आपकी परफॉर्मेंस पर, कि आप किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, किस चीज की कमी है, किसको हमें कोप अप करना है आपके साथ। तो सारी चीजें प्लस सारे सब्जेक्ट्स मेजर टू मेजर एंड माइनर टू माइनर कवर कर रहे हैं। इवन स्टेट लॉज, लोकल लॉज, लैंग्वेजेस भी कई स्टेट्स में आती हैं तो उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस 360 जो हम 360 बोल रहे हैं उसमें सारी चीजें कवर हो रही हैं। आपको एक भी चीज के लिए सोचना नहीं है कि मुझे इस चीज के लिए शायद कहीं और जाना पड़े। आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, So ये चैनल है, one-stop दैट solution. मींस यू हैव एवरीथिंग। So you Yes, have a one one-stop stop solution. right. So we don't have to worry. Yes, और लैंग्वेज की कोई yes प्रॉब्लम sir, नहीं है। अभी आप सुन ही रहे थे, जिन लोगों को डाउट्स आ रहा था, yes sir. बाइलिंगुअल है तो इंग्लिश होगा, हिंदी होगा। ओके, सो आइडिया ये है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, सो दैट इज द एंटायर थिंग। तो देवशी सर, हम कब स्टार्ट कर रहे हैं एंड व्हाट आर वी So स्टार्टिंग? we, हाँ, yeah. So with reference to this channel, अभी कुछ already कुछ videos learners के लिए पड़े हुए हैं. There are some important topics that we have been discussing in the past time. But now, as we all know, that Sanyog sir has also joined our team. So we will be starting from 12th. This Uday batch, in that will be a full-fledged program in which we Okay. will be also. So friends, Yes. important, note it down. 12th May 2021, बैच का नाम उदय बैच, UDAY। ओके, तो 12th May 2021, ओके, आपकी जर्नी शुरुआत होने का दिन। ओके, स्टॉलवर्ड्स एंड चैंपियंस एंड एक्सपर्ट्स जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन, दे आर ऑल देयर। बाइलिंगुअल होगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं। अपूर्वा मैम ने बोल दिया है, डाउट्स आपके पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। ओके, देवशी सर लेजिस्लेटिव इंटेंट और फ्लो एंड टाइम मैनेजमेंट की बात आपको बता चुके हैं। संयोग सर के बारे में मैं जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ ओके कि आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, तो मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। एंड 12th May 2021, एक बार मैं संयोग सर से स्टार्ट करूँगा। संयोग सर, क्या आप टाइमिंग्स ऑफ योर क्लास शेयर करेंगे प्लीज़, इफ इट इज़ पॉसिबल? Sir, we are going to start it from 12th से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड मॉर्निंग में मेरा बैच रहेगा और आफ्टरनून के बाद अपूर्वा मैम का बैच रहेगा और इवनिंग में देवश्री सर का बैच रहेगा। सो यू और टाइमिंग्स जो है टाइमिंग्स है वो चैनल पे आप सब लोगों को मिल जाएगी जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट। So we have all 3 slots, okay, और 3 paths। टाइमिंग्स के लिए प्लीज आप चेक करते रहिए, एग्जैक्ट टाइमिंग शेयर हो जाएंगे ऑन दिस पार्ट। एंड आई थिंक आपको सारी If I can just add one thing, sir. प्लीज If I, yeah, please. I just want to tell all the aspirant that this is the prime time when you can be a judicial aspirant in the country. पिछले 1-1.5 साल से जो पैंडेमिक सिचुएशन कंट्री में रही वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट वाज इट्स वेरी बैड, बट उसका एक जो दूसरा साइड है वो ये है कि देयर हैवंट बीन एनी एग्जाम फ्रॉम द past 1 or 2 years. So the vacancies have been lined up. You name the state, there are vacancies. और दिस इज द टाइम, आने वाले 3-4 महीने जो हैं वो आपकी लाइफ के लिए बहुत क्रूशियल है। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बट प्रिपेयर वेल, सो एज सून एज द थिंग्स गेट बेटर आप इस पोजीशन में हो दैट यू क्रैक इट इन वन गो। दैट्स द आइडिया। दैट इज ग्रेट। एक्चुअली ये देवशी सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है, दैट वी हैव बिगर वैकेंसीज, लार्जर नंबर ऑफ वैकेंसीज, सो दैट्स अ हायर चांस। तो जुडिशरी में हमेशा से नंबर ऑफ सीट्स वाज ऑलवेज अ काइंड ऑफ टेंशन वाला situation, but I think it is better now. I'm not saying that COVID situation will be going away और है आज है या nobody knows, these are unsure times, but इस time पर the status quo situation is this. So
Thank you very much, Sayog sir. Thank you very much, Thank you, Purva sir. ma'am. Thank you Sir, very thank you, much, sir. Rishi sir. And I wish you all the best and make India proud. Get us the best judicial officers. The better judges, the better this world will be. That's what I'm. Siddharth, sir, Yeah. can I add something? Please, please. Actually, I request you all, to say the tagline of an academy. Let's crack it. Let's crack it. Let's Thank you crack very it. much. It is such a beautiful thing. Thank you. Stay safe, my friends. Everyone, please. These are difficult times for the world. Stay safe. Stay at home wherever is possible. और बाहर जाओगे तो भी be very, 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 very careful. ये pandemic आया है. This is a challenge to humanity. But we are sure that we will prevail and humanity will ultimately come out as a winner. And in the words of an academy, let's crack it. And God bless and Jai Hind. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.